Assalamu alaikum. This is the video where we discuss the all important DAX. Let's get to my whiteboard. We are going to discuss here is DAX DAX. DAX basically is sort of a language, if you will, and it's the two kinds of DAX: calculated columns and measures. तो जिस तरह फॉर्मूलाज हमने बनाए थे ना एक्सेल में, उसी तरीके से इसके अंदर कुछ फॉर्मूलाज हैं दैट वी कैन यूज टू सॉर्ट ऑफ मेक सर्टेन कैलकुलेशंस. अब इन दोनों में थोड़ा सा फर्क है, कैलकुलेटेड कॉलम और मेजर में. ये थोड़ा सा समझ लें. जो आपका कैलकुलेटेड कॉलम है ना, इसकी खसूसियत ये है कि ये कहीं ना कहीं ऐड कर रहा है स्पेस में, यानी ये टेंजिबल है. ठीक है, तो पहली बात तो आपने ये याद रखनी, कैलकुलेटेड कॉलम्स आर टेंजिबल. लेट मी जस्ट डू दिस अगेन. Calculated columns, and that is because they actually add up to the space of a given table. So ये फिजिकली जो इजाफा कर रहा है आपके टेबल के अंदर कैलकुलेटेड कॉलम. मेजर actually doesn't do that. So measure is just like a recipe without the actual ingredients. Yeah, there's another way of looking at it, that is कि measure रूह की तरह है, या आप ये कह लो is like a spirit which physically doesn't exist unless and until it gets into some kind of a body. So ये आप कह सकते हो कि जी measure जो है ना, it's just some sort of ingredient mix that we can make and put it somewhere without adding up to the overall volume of our data. दोनों के अंदर एक और मसला है, दोनों के अंदर जाहिर है पेक्यूलियर चीजें ना. तो कई जगहों पे आप कैलकुलेटेड कॉलम यूज कर लेते हो, मगर बहुत ऐसे आपके पास सिनेरियोज आएंगे जहां कैलकुलेटेड कॉलम्स नहीं यूज हो सकेंगे. और उसकी वजह ये है कि फॉर एग्जांपल रेवेन्यू है ना, तो अगर आपने टोटल रेवेन्यू निकाल लिया या कुछ इस तरह कैलकुलेशन निकाल लिया तो वो सेम रहेगी. इट विल नॉट really be broken into filter context. But let's just stop here as far as explanations go, और practically हम ना देखते हैं हमारे पास क्या है. So first things first, let's just have a look at the calculated columns, and there is a table that we used previously. I would like to have a look at details table. डिटेल्स टेबल में अगर आप गौर करें ना, तो मेरे पास ऑर्डर आईडी के अलावा प्रोडक्ट्स हैं. जस्ट डिलीट दिस, ये क्योंकि मैंने फाइल पहले यूज की हुई है. और लेट मी वेरी क्विकली डिलीट दिस पर्टिकुलर थिंग व्हिच इज माय calculated column, and I'm going to obviously recreate it. So I have to first delete it from my data model ताकि मैं आपको दोबारा करके दिखा सकूं. ले सो मैं कैलकुलेटेड कॉलम बनाना चाह रहा हूं. एंड अगेन याद रखें, कैलकुलेटेड कॉलम एक्चुअली एग्जिस्ट. इस पर्टिकुलर टेबल में प्रोडक्ट हायरार्की की आएगा, जो कि ये जो प्रोडक्ट बैंड है, लेट मी जस्ट ब्रिंग इट इन. जो ये प्रोडक्ट बैंड के अंदर प्रोडक्ट्स लिखे हुए हैं, उनको थोड़ा सा शॉर्ट करके दिखाया, बिकॉज यू सी this is too long and it's taking up too much space. I probably find myself in a situation जहां पे मैं आगे वाली चीजें दिखा भी नहीं पा रहा आपके सामने unless and until मैं filters को हटा दूं. So
प्रोडक्ट ब्रांड जो है मैं छोटा करके दिखाना चाह रहा हूँ. For that, what I would do is create a calculated column which simply takes the value of each row and does something to it to create a new calculated column. So yeah, we can do it. Let's see how to do it. इसमें बेहतर तो यही है कि जिस कॉलम के अंदर आप है उसी जिस टेबल के अंदर है वही कोई कॉलम बना ले. फॉर इंस्टेंस ये टेबल है ना प्रोडक्ट, एंड लेट मी जस्ट गेट रिड ऑफ दिस प्रोडक्ट ब्रांड बिकॉज इट्स टेकिंग टू मच स्पेस, एंड मैं छोटा जो उसका वर्जन है ना एवरेज वो यहाँ पे ले आऊंगा. तो कैलकुलेटेड कॉलम में मैंने बनाना है. आई एम गोइंग टू राइट क्लिक एंड से दैट आई वांट टू क्रिएट अ कैलकुलेटेड कॉलम. दिस इज प्रोडक्ट नेम इन शॉर्ट. ये देखिए ऊपर एक फॉर्मूला बार के अंदर फॉर्मूला खुल गए. नाउ व्हाट आई कैन डू स्टार्ट टाइपिंग प्रोडक्ट नेम and I'm going to call it short, SHRT. And now what I can do is start typing in the formula. The great thing about calculated columns is कि directly एक table के अंदर कोई भी column जो है वो accessible हो जाता है इससे. मेजर के अंदर ऐसा पॉसिबल नहीं है, वो मैं आपको बताता हूँ क्यों. मेजर बेसिकली एग्रीगेशन करती है. तो ये प्रोडक्ट नेम है. फॉर इंस्टेंस इफ आई वांट टू एक्सेस प्रोडक्ट ब्रांड तो मैं एक्सेस कर सकता हूँ. ये लिस्ट आ जाएगी मेरे पास. जस्ट टाइप इन ब्रांड तो ये देखिए मेरे पास आ गया. टाइप इन अ टैब एंड देयर यू गो. सो ये देखिए ये मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ. नाउ ऑब्वियसली आई वांट टू पुट इन अ फॉर्मूला हियर. And the formula is a very simple one. This is something that we've used before. और ये लेफ्ट का फॉर्मूला है जो हमने एक्सेल के अंदर किया था. तो लेफ्ट का फॉर्मूला क्या करता है कि किसी भी फील्ड के जो टेक्स्ट है उसको कटेल करने में मदद करता है फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड. What I want to do is pick up this brand column and I just want to pick in the first 10 characters. इसको एंटर कर देता हूँ. ये एक नया कॉलम बना देगा प्रोडक्ट नेम शॉर्ट के नाम से. और I think I'm having some trouble here. Let's see where we went wrong. कहीं ना कहीं कोई शायद ज्यादा ब्रैकेट डल गई है. Let's try this out. तो एक ब्रैकेट ज्यादा डल गई थी. तो ये we're good now. So if I go to product hierarchy, let me just go to a table view. और अगर मैं product hierarchy में जाऊं तो आप ये देखें प्रोडक्ट नेम जो पूरा टेबल है वो भी नजर आ रहा है आपको. और प्रोडक्ट नेम शॉर्ट भी कहीं ना कहीं होगा. लेट मी जस्ट सी वेयर. ये देखिए प्रोडक्ट नेम शॉर्ट ये भी नजर आ रहा है. So maybe what I would like to do is just change my formula a little bit. और मैं ये 15 कैरेक्टर्स करना चाहता हूँ ताकि थोड़ा सा ज्यादा कैरेक्टर्स जो है ना वो नजर आए, थोड़े से कम नजर आ रहे हैं. There. So this makes a little more sense and I sort of get a hang of things. अब ये calculated column मैंने यहाँ पे बना दिया, which is very nice. So what I can do is go to my visual. जो टेबल है मेरा यहाँ पे, टेबल में अब मैं ये शॉर्ट वाला कैलकुलेटेड कॉलम है ना, सॉरी नेम है प्रोडक्ट नेम, उसको भी मैं यहाँ पर ला सकता हूँ. And this sort of solves my issue because now I'm showing little more data and मेरी स्पेस जो है ना वो बच रही है. एक चीज याद रखें कि ये मैंने टेक्स्ट के ऊपर फंक्शन लगाया है. दैट डज नॉट नेसेसरीली मीन कि कैलकुलेटेड कॉलम सिर्फ टेक्स्ट के ऊपर लगेगा. कैलकुलेटेड कॉलम में मल्टीप्लिकेशन वगैरह सब कुछ हो सकता है. But then again, it does not make any. Sometimes it does not make any sense because sometimes what happens is कि आप फिल्टर कॉन्टेक्स्ट नहीं बना पाते उसको. तो इस वजह से उसमें मेजर बनाना सूरत में ज्यादा बेहतर है. Let me see. Okay, let's now move on to our next topic, which is measure. And measure का जब तक मैं आपको एक आधा मेजर बना कर नहीं दिखाऊंगा तब तक आपको समझ नहीं आएगी इसका मैजिक क्या है. So
मेजर की अच्छी बात यह है कि इट्स नॉट रियली डिस्टर्बिंग योर डेटा. ऑल यू डूइंग इज कि आप एक रेसिपी बना रहे हो जो जहां पर जरूरत आपको पड़ेगी उसको फिल्टर कॉन्टेक्स्ट में डाल के आप उसको यूज कर सकते हो, विजुअल्स में, टेबल्स में, जहां पर भी. बट एक्चुअल जो आपका टेबल है या डेटा है वो तब्दील नहीं हो रहा. So let's create, let me just put in my text. Let's just create a first measure that is the first 5% revenue split. तो let's suppose कि किसी ने कहा कि रेवेन्यू में 5% हिस्सा एक मखसूस किसी कंपनी का है और हम ये चाह रहे हैं कि पता चल जाए हमें कि एग्जैक्टली वो क्या है. तो जाहिर है हम उसको ब्रेकअप करके भी देख सकते हैं, प्रोडक्ट वाइज भी और स्टेट और सिटी वाइज भी. सो व्हाट वी रियली वांट टू डू इज क्रिएट अ मेजर कॉल्ड 5% रेवेन्यू स्प्लिट. रेवेन्यू ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है सेल्स के अंदर, ये देखिए. So now there are a couple of things. Either I just right click here and create a new measure. Let me just do that. उसके बाद फिर मैं measures को मैं organize करूंगा. एक नया मेजर बनाता हूँ मैं. और ये याद रखें कि मेजर की खूबसूरती ये है कि आप इसको जरूरी नहीं कि जो यूज कर रहे हो रेसिपी के अंदर या जो कॉलम यूज कर रहे हो उस टेबल के अंदर हो. आई मीन इट कैन बी एनीवेयर एंड आई एम एक्सप्लेन दिस इन अ मिनट. से 5% रेवेन्यू का मुझे मेजर बनाना था. ये सो द रियल इशू विद रेवेन्यू इज, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ रेवेन्यू का कॉलम पकड़ने की कोशिश करूंगा, इट्स नॉट गोइंग टू अलाउ मी टू डू दैट. आई कैन ट्राई एज मच एज आई लाइक. इट्स नॉट इंटेलिजेंस जो है ना वो मुझे आगे टाइप ही नहीं करने दे रहा इसका. आई मीन आई कैन टाइप इट बट कोई फायदा नहीं उसका, वो उसको पकड़ नहीं रहा. वजह क्या है? वजह बड़ी छोटी सी है और वो ये है कि एक्चुअली मेजर की नेचर इस किस्म की है कि वो सिर्फ और सिर्फ एग्रीगेशन की तरफ जाता है. तो यू नीड टू पुट इन अ फॉर्मूला हियर, सम, एवरेज, व्हाटएवर, कोई ना कोई आपको एग्रीगेशन का फॉर्मूला यार डालना पड़ेगा. इन माय केस आई जस्ट वांट सम एंड अब मैं अगर टाइप करूं तो ये रेवेन्यू जो है ना मुझे फिर नजर आ रहा है. So what it's going to do is sum up the values in this particular column. That's what I really want. And multiply it with 5%. There you go. Enter it and see whether it works. ये देखें जी, ये आपका कॉलम मेजर बन चुका है and it has a slightly different आइकन. एक कैलकुलेटर सा बना हुआ है यहाँ पे और उसके साथ आपका मेजर बन गया. Let's just bring this in because I would like to see whether it breaks according to the filter context or not. In fact, what I'm going to do is make a new table और उसमें हम दो तीन चीजें ले लेते हैं. प्रोडक्ट का नेम ले लेते हैं. प्रोडक्ट नेम शॉर्ट बल्कि हमने बनाया हुआ है, व्हाई नॉट यूज दैट. कैटेगरी ले लेते हैं एंड इसके अलावा let's just bring in revenue, of course the total revenue, and we can bring in the 5% revenue as well. इसमें सर formatting आप कर लीजिएगा. Formatting में you just have to click it और यहाँ पे आप इसको currency declare कर सकते हैं with obviously 2 decimal points. I think that's enough. Just call it 2. थोड़ा सा मेरे सिस्टम पे जो भारी है ये, इसमें taking just a little more time. ये लेंगे अब, ये इसको ट्रैक कर लेते हैं हम यहाँ पर. there you go. So now I know product by product मुझे पता चल रहा है कि 5% revenue which obviously is somebody else's, वो मुझे पता चल रहा है. And of course this can be broken down however you like. इसको visual के अंदर भी आप लेकर आ सकते हैं. Let's just make a visual of it as well. चलें जी,
इसको हम कैटेगरी वाइज भी देख सकते हैं इफ यू वांट टू। कैटेगरी को एक्सेस में डाल लें एंड 5% रेवेन्यू को आप वैल्यूज के अंदर डाल लें। सो दे ये आपको पता चल रहा है कैटेगरी वाइज भी जो आपने शेयर लोगों को देना है उसमें स्नैक्स में सबसे ज्यादा है एंड बेबी केयर में शायद सबसे कम है। किचन में इनफैक्ट there's a value here. I don't think there's a value here. In fact, if you want to have more holistic view, तो आप इसको ऐसा करें कि रेवेन्यू को भी साथ ले लें, ठीक है। तो ये अब आपको पता चल रहा है, रेवेन्यू भी पता चल रहा है और जो आपने देना है वो भी पता चल रहा है। ऑफ कोर्स दिस नीड्स टू बी zoomed in. Either you can do that or maybe just 5% को आप मल्टीप्लायर के अंदर रख लें। Obviously वो मल्टीपल फिर बनाएगा, probably will not work that way. So what you can do is probably add in a zoom slicer, and this will really help you get into this figure, which is something that you owe 5% revenue. तो इस तरह आप visuals भी इसके बना सकते हैं। I'm going to erase this for the moment, but I hope that you get the point. Let's make another visual very quickly, that is 5% average price. So if somebody wants to know 5% of the average price क्या है product की, so we can do that. Let's just go to product hierarchy because price is यहाँ पर है। Let me just type price, पता चलेगा कहाँ पे। अच्छा यार सेल्स के टेबल में, सेल्स के टेबल में प्राइस है, यहीं पे हम मेजर बना लेते हैं। And I say that this is 5% of average price. तो अगेन इसमें आपको सबसे पहले तो कोई मेथड लगाना पड़ेगा एग्रीगेशन का। in our case it's obviously price average, and we're going to run it on the price column. तो प्राइस का कॉलम ये है, and we are going to multiply what the sum with 5%, and फिर कोई गलती कर दी हमने कहीं ना कहीं। there is a mistake. Every function only accepts a column reference. Column reference ये है। We close this bracket here and there you go, now it works. ठीक है जी, अब आप इसको देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यू वांट टू हैव अ लुक एट दिस 5% प्राइस, तो इसको भी आप नया टेबल बना लें बेशक। just create a new table and इस टेबल के अंदर मैं वैल्यूज के अंदर प्राइस भी लाना चाहूंगा और 5% ऑफ द प्राइस भी लाना चाहूंगा। कितनी बनती, और ऑब्वियसली प्रोडक्ट का नाम भी तो बताना चाहिए ना, प्रोडक्ट नेम इन शॉर्ट। सो नाउ आई नो कि कितनी प्राइस बनती है मेरी। एक चीज जो है वो ऑब्वियसली जरूरी है, वो यू विल हैव टू डिफाइन एज व्हाट यू क्रिएटेड। सो ये 5% जो प्राइस है, दिस इज ऑफ कोर्स व्हाट इट रियली इज अ करेंसी। सो इट्स बेटर आइडिया टू sort of make it a currency है, और डॉलर साइन बी दे दें, और ये this is not very desirable because of too many zeros, so just make it 2 decimal points and then this should ready do, ठीक है। ये देखिए आपका 5% का फिगर जो है वो निकल गया है। And obviously this can be used in any visual टेबल के अलावा भी आप इसको कहीं पर भी यूज कर सकते हो।
So this is the second measure that we have made. Now it is time to start cleaning up things because ये measures आप अगर tables के अंदर ही बना रहे हैं तो कोई इतनी neat practice नहीं है. Why don't we create and sort of a table जिसके अंदर हम ये measures जो है वो फेंकते जाए. For that what I'll do is create a new table in my model. अगर enter data मैं यहाँ पे ऊपर press करूँ तो what I'll have is a create table option, and I don't want to really create a table that is functional, but I just want to use it as a placeholder. यहाँ पे मैं इसका नाम फिर रख सकता हूँ Mayors placeholder से present. तो अप्लाई चेंजेस कर लेते हैं. देखिए ये बन गया प्लेस होल्डर. तो मैं इसको if I click it down, obviously सॉरी डेटा मेंशन है ये एक कॉलम है यहाँ पे और कॉलम 1 उसने फर्जी सा बनाया हुआ. You just delete it, you know, it doesn't make any sense to have it. तो हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ मेजर्स जो है ना वो हम कॉपी कर लें. कॉपी क्या कर लें बल्कि इसको प्लेस करते हैं. we created I guess 2 measures और वो सेल्स के टेबल में ही है. if I now go to my sales table और अगर मैं यहाँ पर जाऊँ और क्लिक करूँ तो ये ऊपर इसके ऑब्वियसली प्रॉपर्टीज भी खुल रही हैं. लेट मी जस्ट मेक इट 2 3 पता नहीं कैसे हो गया ये डेसिमल प्लेसेस. नाउ इफ यू हैव लुक हियर नेम के नीचे होम टेबल है. आप इसका जो है ना चेंज कर सकते हो एज वेयर इट रिसाइड्स. अभी तो ये इस टेबल के अंदर है ना. वी वांट इट टू शिफ्ट टू इट्स नेटिव टेबल जो भी हमने क्रिएट किया है. तो बट आई थिंक मुझे रिफ्रेश करने की जरूरत है. इट्स नॉट रियली शोइंग. आई थिंक व्हाट हैज हैपेंड इज के डिलीट करने की वजह से शायद मैंने पूरा टेबल ही डिलीट कर दिया. ओके what we will do is very quickly create another one. Enter data. I'm going to say that this is Mayors placeholder. Apply changes. Mayors placeholder आ गए यहाँ पे. Who there है which makes me think that there should be another one. Maybe it is hidden or something. We try to view hidden. Okay, never mind. हम ऐसा करते हैं कि इसके अंदर ही अपने मेजर्स को डाल लेते हैं. Let's go here. And I want this to be placed at measures placeholder. ये उधर जगह इसको इसी तरीके से ये रेवेन्यू वाला जो मैंने मेजर बनाया है I want this to be gone from here. मैं ये चाह रहा हूँ ये मेजर placeholder हो जाए. तो ये दो जो मैंने मेजर्स बनाए थे ये अपनी असल जगह पर चले गए. क्लिक नहीं हो रहा. Let me do this again. Okay, this might take a little time, but eventually ये उसको लेगा यहाँ पे, which is great. आखिरी चीज ये कॉलम मुझे नहीं चाहिए. I'm going to delete this from the model. ठीक है. Finally, इसका अगर आप नाम चेंज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, but I think it's fine. वो मैं हटाना चाह रहा था इसमें से. Let's see if I can get across it or change the name entirely. Mayors TBL रख देते हैं.
ओके, सो नाउ रिमेंबर कि अगर मैं यहाँ पर भी मेजर बनाता हूँ ना, तो आई एवरीथिंग इज एक्सेसिबल टू मी, राइट? सो लेट्स जस्ट क्रिएट अ फ्यू मोर मेजर्स। लेट्स सपोज कि आप ये जानना चाह रहे हैं कि कितनी डिफरेंट प्राइसेस हैं आपके पास, एंड ऑफ कोर्स प्राइसेस, इफ आई गो टू माय डेटा व्यू, तो कहीं ना कहीं प्राइसेस का एक ये इंफॉर्मेशन जो है ना मुझे मिल जाएगी। जस्ट टाइप इन प्राइस, तो ये है सेल्स के टेबल के अंदर ना प्राइस है। लेट्स हैव अ लुक एट इट। प्राइस ये, आई जस्ट वांट टू नो थ्रू माय मेजर की कितनी तादाद के अंदर जो है ना प्राइसेस मेरे पास मौजूद है, डिफरेंट वो भी। लेट्स जस्ट डू इट, सिमिलर नहीं, डिफरेंट। I'm going to create a new measure here. तो उसको मैं कह लेता हूँ different prices, and surely what I need is a some kind of an aggregate uh, method here. Count मैं use कर सकता हूँ, and now what I can do is go to my prices tab and I can enter it. But there is an issue here. This is going to work, मगर ये correct answer नहीं देगा. Surely ये correct answer नहीं देगा. Let me just bring in my make another table. यहाँ पे मैं डिफरेंट प्राइसेस से पहले मैं प्रोडक्ट इन शॉर्ट ये दे देता हूँ, और इसके अलावा व्हाट आई कैन डू इज bring in my new measure which is different prices. ये दे. Now there's an issue here. वो ये है कि ये बेसिकली फॉर्मूला जो मैंने लगाया है ना, ये टेक्निकली गलत है, बिकॉज ये प्राइसेस तो दे रहा है मगर ये सिर्फ काउंट कर रहा है उसको, डिफरेंट प्राइसेस नहीं है। सो आई गॉट टू चेंज इट। मगर मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि चूंकि काउंट भी है वैलिड एक चीज, तो फिल्टर कॉन्टेक्स्ट में वैसे दे रहा है, दैट इज वेरी गुड। बट व्हाट आई एम गेटिंग इज कितनी प्राइसेस है, टोटल प्राइसेस है, इट्स नॉट डिफरेंट प्राइसेस। सो in fact what we can do is just change this the name। हम इसको सिर्फ प्राइसेस रख देते हैं, वेरियस प्राइसेस रख देते हैं, वी प्राइसेस मेजर का नाम, और एक नया मेजर बनाते हैं डिफरेंट प्राइसेस के नाम से। तो दिस इज डिफरेंट prices is equal to, and now what I'm going to use is distinct count। डिस्टिंक्ट काउंट वो फंक्शन है जो डिस्टिंक्टली काउंट करेगा उसको, यानी जो प्राइसेस रिपीट हो रही हैं उसको एक्सक्लूड करेगा। एंड नाउ आई कैन यूज माय प्राइस वाला कॉलम एंड क्रिएट दिस मेजर डिस्टिंक्ट काउंट। तो मैं डिस्टिंक्ट प्राइसेस लेकर आ रहा हूँ आप, यू सी नाउ द फिगर रियली चेंजेस, बिकॉज ये अब जो सिमिलर वैल्यूज हैं वो काउंट नहीं कर रहा, सिर्फ जो डिस्टिंक्ट वैल्यूज हैं उनको काउंट कर रहा है। ठीक है, अगर मैं इसके अलावा भी ले आऊं डिफरेंट टोटल, एंड ये दोनों के अंदर आपको ना फिगर के अंदर फर्क नजर आएगा। ठीक है, दोनों को लेजेंड के अंदर ही करना चाहिए मुझे, इसमें सॉरी एक्सेस में नहीं जा रहा। मैं ऐसा करता हूँ कि इसको
कंपैरिजन के लिए दोबारा ट्राई करता हूँ। प्राइसेस नहीं जा रहा, because obviously this is not being applied or anything, it's just a formula. So if you just sort of dragging it in a visual like this, it's not going to work. Anyway, I hope that I've sort of drilled in the point home. एक और चीज होती है, एक और फॉर्मूला होता है, and let me just try to elaborate on that. If I go back to my data view, तो एक चीज है काबिल गौर, तो ये है कि कई ऐसी चीजें हैं जिनकी प्राइस जीरो है, यानी अभी प्राइसेस नल वैल्यूज है, यानी डिटरमिन ही नहीं हुई। नो द इशू हियर इज कि उसके अगेंस्ट इर्द गिर्द दाएं बाएं तो डेटा है। So this can be really problematic because sometimes what you really want is, because अगर आप काउंट कर रहे हो ना प्राइसेस को, या डिस्टिंक्ट काउंट कर रहे हो, तो हो क्या रहा है कि वो सिर्फ नल वैल्यूज के अलावा वाली चीजें काउंट कर रहा है। मगर प्रॉब्लम ये है कि ये नल वैल्यू अभी कोई इसको नहीं दी, मगर इसके अगेंस्ट प्रोडक्ट तो एग्जिस्ट कर रहा है ना। अगर इस तरह की सिचुएशन है तो यू विल नीड अनदर मेजर हियर, लेट्स जस्ट कॉल इट total prices, and I know that this is bound to get a little confusing, but I hope that you get the point. मैं ये चाह रहा हूँ कि जितने भी टोटल प्रोडक्ट वर्क रखना, टोटल प्रोडक्ट प्राइसेस रख देते हैं, और टोटल प्रोडक्ट प्राइसेस में नाउ व्हाट वी रियली वांट टू यूज इज अ न्यू फॉर्मूला, एंड दिस फॉर्मूला इज not distinct of course, but we just want to sort of go through all the rows, भले उसके अंदर null values है या नहीं है, सारे के सारे ही हमें इसके अंदर इनकलकेट करने पड़ेंगे। So if I go to my, just type in count, तो इसमें अगर आप देखें तो मेरे पास काफी ऑप्शंस हैं। वैसे अगर मैं काउंट के अगर रोज टाइप करूं तो एक फॉर्मूला निकल आता है जो बड़ा मजे का फॉर्मूला है, क्योंकि ये कॉलम नहीं मांग रहा मुझसे। What it's really asking me to do is give the entire table. तो ये हर टेबल में भले नल वैल्यू क्यों नहीं है उसको पकड़ के काउंट करेगा। So what I'm going to do is put in this entire table as a feedback, as an input, and देखते हैं अब क्या होता है। ये देखिए अब आपको फॉर्मूला बन गया। For this what I'll do is just bring in a card, कार्ड लेकर आते हैं हम, ठीक है। और टोटल प्रोडक्ट प्राइसेस अगर मैं इसमें करूं, अब क्या है कि ये मुझे एक फिगर दे रहा है जो कि नल वैल्यूज को भी शामिल करके है, which is great. What if I drag this here? Then ये अब कोशिश कर रहा है ब्रेक करने की फिल्टर कॉन्टेक्स्ट के साथ इसको, और कुछ सिमिलर आपको वैल्यूज इसमें नजर आएंगी, मगर कुछ डिसिमिलर वैल्यूज भी नजर आएंगे। फॉर इंस्टेंस नूडल्स के अंदर अगर आप देखें तो जो हमने प्राइसेस की थी पहले कैलकुलेट काउंट की थी रोज, वो थी 564, और ये कर रहा है 573, which means कि there's a difference, which makes me think कि नूडल्स की कुछ प्राइसेस अभी अनडिटरमिन्ड है। That is because there are null values in the prices, right? So and now you must be wondering कि जब हमने डाटा क्लीनिंग की तो ये क्यों नहीं देखा। ऐसा नहीं है, डाटा क्लीनिंग के टाइम पे what we were really worried about were you know not null values but null values in the first column, in the primary column. So वरना it makes a lot of sense to have null values. That is because there could be situation, जैसे इसमें situation डिटर्जेंट में दोनों काउंट सेम है, which means कि तमाम की तमाम prices determined है। But if you look at this particular product, तो इसके अंदर 172, 172, 174 का फिगर है, यानी दो कम से कम प्रोडक्ट्स हैं जिनकी अभी प्राइसेस डिटरमिन नहीं हुई।
So this particular formula gives us a lot of power to sort of have a look at what's happening. ठीक है जी, अब आ जाते हैं हम बड़ी तेजी से एक और चीज के ऊपर। हम कोशिश करते हैं एक अल्टरनेटिव रेवेन्यू बनाने की। सो alternative is basically because we already have a revenue column, but what we want to do is make an alternative uh, column, because चूंकि null values भी हैं तो हम वो null values को mitigate करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम प्राइस इनटू सेल्स करके ना जो हमारे पास है एक्चुअली उसका एक मेजर बनाते हैं। लेट मी जस्ट क्रिएट अ न्यू मेजर and it's called it alternative measure is equal to, of course, sales summation. Again, this is a common mistake. I can just, I have tendency of typing in the column, and of course this is not a calculated column. What I really want to do is probably give uh, the aggregation formula first, and then maybe I can go for whatever I like. So in this case, if I say कि मैं sum करना चाह रहा हूँ ना total, and I go for sales, और sales का column price है, चलो price में निकला price, and I want to multiply this with what? Sales. I don't know where sales is, and I cannot really type in. I really have to see कि sales है कहाँ पर. See sales कहाँ पर है, and वहाँ से ये sales. So I'm having some serious trouble here because now the issue is कि एक तो अगर मैं मल्टीप्लाई करने की कोशिश कर रहा हूँ तो वो हो भी नहीं रहा, ठीक है। और अगर मैं even if I succeed in doing that, then the issue persists because what I really want to do is कि दो जो वैल्यूज है वो पहले मल्टीप्लाई हो जाए और उसके बाद फिर सम हो, तो ये मुझे नहीं करने दे रहा। That is because what I am trying to do here is uh, homing in on something called iterative values. Iterative values ये होती है कि कॉलम्स में पहले मल्टीप्लिकेशन हो जाए, सॉरी रो, हर रो पे मल्टीप्लिकेशन हो जाए और फिर जो टोटल वैल्यूज है उनका एग्रीगेट हो। तो आई कैन अंडरस्टैंड दैट यू कैन प्रोबेबली क्रिएट अ कैलकुलेटेड कॉलम एंड अचीव द सेम रिजल्ट, बट देयर इज एन इजियर वे ऑफ डूइंग इट। और वो कुछ यहाँ पे हमारे पास सॉरी कुछ हमारे पास एक तरह के यू नो मेथड्स हैं या फंक्शंस हैं जिन्हें हम आइटरेटिव कहते हैं। फॉर एग्जांपल सम एक्स, एवरेज या सम के साथ अगर आप एक्स लगा देंगे ना तो यू विल गेट ग्रेट पावर टू डू ग्रेट थिंग्स, व्हिच मींस कि नाउ इट्स आस्किंग मी कि कौन सा कॉलम है जहां पर आप ये मल्टीप्लिकेशन जो भी करना चाहते हैं। तो ऑब्वियसली ये कॉलम है सेल्स का, एंड देन आई पुट अ कॉलम एंड से कि कौन से दो कॉलम है जिन पे आप मल्टीप्लिकेशन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू वो करना चाह रहे हैं। तो now I can really say, and it's really showing me price, ठीक है, ये है multiply by sales, और sales किधर है, sales is there you go. So now what's happening is, and let's just take a minute to understand कि ये क्या हो रहा है यहाँ पे, कि तीन आर्गुमेंट्स हमने दिए हैं आइटरेटिव फंक्शन के अंदर, और पहला है कि हम ये चाह रहे हैं कि इस पर्टिकुलर कॉलम में दो चीजें हों, रो बाय रो प्राइस को सेल्स के साथ मल्टीप्लाई करता जाए और उसके बाद फिर उसका सम कर दे। तो ये हमारे पास ना अल्टरनेटिव रेवेन्यू निकल आएगा। लेट मी जस्ट टाइप इन अल्टरनेटिव, एंटर कर देता हूँ इसको।
ये लीजिए या अल्टरनेटिव रेवेन्यू निकला एंड वी कैन हैव अ लुक एट the alternative as well as the given one now. So I just want to remove this field and मैं अपने मेयर्स पे चला जाता हूँ. So I'm going to bring in my alternative revenue. Now, of course, I want this to be broken down according to the filter context. मैं product but category ले लेते हैं. I think category sounds a little better. ठीक है जी. कैटेगरी वाइज अब मुझे ऑल्टरनेटिव जो है ना वो रेवेन्यू नजर आ रहा है. ऑफ कोर्स यू विल नीड टू चेंज द फॉर्मेटिंग. तो हमने ऑल्टरनेटिव रेवेन्यू ऑब्वियसली बनाया, इस पे क्लिक करेंगे आप एंड यू आर गोइंग टू से दैट दिस रियली इज करेंसी. और 2 से किसको ले जाती है. My system is really getting slow because रिकॉर्डिंग भी हो रही है और Microsoft BI itself is resource intensive. बहरहाल ये अब ठीक हो गया. Lots of dollars. I just want to make sure that it is US dollars. नहीं जी. So ये अब सही आ गया. And I can make it a comparison because there will be a difference because जो इसने रेवेन्यू निकाला हुआ है वो थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से निकाला हुआ है and there might be a difference. Surely you see कहीं ना कहीं जो हमने ऑल्टरनेटिव निकाला है वो डिफरेंट है, ज्यादा है जो उसने निकाला. सर मे बी ड्यू टू null values and other reasons, but surely we have found a way to create our revenue. Now you're going to use this in the projects as well. मगर प्रोजेक्ट में एक छोटी सी मुश्किल आपको पेश आएगी. वो ये है कि एक ही यहाँ तो अगर मैं ऑल्टरनेटिव रेवेन्यू पे जाऊं तो जाहिर है एक ही कॉलम के अंदर दोनों चीजें थी, मगर वहां पे 2 डिफरेंट टेबल्स के अंदर है. तो वी आर गोइंग टू सॉल्व दैट इशू एज वेल. बट बिफोर आई गो देयर लेट्स जस्ट क्रिएट अनदर मेजर ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए. और उसको कहते हैं हम एवरेज बेस डायमेंशन. एवरेज बेस आई वांट टू कैलकुलेट द एवरेज बेस डायमेंशन फॉर एवरी कैटेगरी. ठीक है, तो कुछ मेरे पास डायमेंशन मौजूद है. लेट मी जस्ट क्रिएट a new measure. I'm going to say average base dimension. I want to see it as category wise देखना चाह रहा हूँ ना क्या सिचुएशन है. तो इज इक्वल टू लेंथ मेरे पास कहीं ना कहीं प्रोडक्ट्स की मौजूद थी. एवरेज है तो एवरेज का हम लगाएंगे फॉर्मूला बिकॉज एग्रीगेशन के बगैर तो मुमकिन नहीं है. एंड लेंथ को मल्टीप्लाई किससे करना है, डेप्थ से. We have the depth information. Again, जो multiply करना है, I think it would be better idea to use an iterative one. So let's just put an X here, and अब थोड़ा सा देखना पड़ेगा ये कॉलम कौन सा है. I think it was product hierarchy. Yes, product hierarchy. ठीक है, प्रोडक्ट हायरार्की में चले जाएंगे ऑब्वियसली क्योंकि रो टू रो हमने करना है ना, तो इसमें इटरेटिव फंक्शन ही लगेगा. सो डेप्थ multiply by length of the product and this should really do it. Base dimension आपकी आ जाएगी. So if I create a new table here and it could be a visual, but let's just put it in there because I really want to look into the entire data. तो कैटेगरी को मैं यहाँ पे ले आता हूँ और इसके अलावा जो अभी बनाया है मैंने मेजर किधर चला गया, एवरेज बेस डायमेंशन ये भी आ गया.
So now obviously this is in, I don't know exactly सेंटीमीटर्स में है या क्या है, तो ये आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि जो डेटा आपके पास है एग्जैक्टली वो कौन सा क्या चीज है। तो ऑब्वियसली ये होल नंबर या डेसिमल में ही रखना मुनासिब है, बट एग्जैक्ट मेजर इसका क्या है दैट आई एम रियली अनअवेयर ऑफ। एनीवे, दिस इज व्हाट यू हैव, ये एवरेज आपको बेस डायमेंशन मिल गई है। उसको अब आप चाहे तो यू कैन कन्वर्ट दिस इनटू सम अदर विजुअल, जैसे कि ये है। एंड ऑफ कोर्स व्हाट आई कैन डू इज just put in inside my filters if I just want to get the top 3 values। तो अगेन आपको मैं सिखा चुका हूँ कि कैसे करना है। कैटेगरी के अंदर जाकर आई कैन चूज माई टॉप एंड भैया, कैटेगरी वाइज अगर मैं टॉप 3 देखना चाह रहा हूँ तो वो भी देखा जा सकता है। रिच पेज को ही मैं वैल्यूज में ला ले आके अप्लाई कर दूंगा। देखो, you know, if you're an operation person, you might like to see कि कौन सी 3 कैटेगरीज है जो ज्यादा स्पेस रहती है। सो दे यू को नाउ यू नो तीनों जो है ना वो अरेंज हो गए। 5 भी हो सकती है, आई थिंक 5 would probably make a little more sense, just bring in the 5 ones there you go। So, ठीक है, let me get rid of this because I just want to see a little more space। and डिसेंडिंग ऑर्डर में सेंडिंग में कर देती। तो आपको पता चल रहा है कि सबसे ज्यादा किचन गार्डन एंड पेट्स की एवरेज पेज डायमेंशन है, और सबसे कम स्नैक्स एंड ब्रेड। और मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस, दैट इज प्रीटी इंट्यूटिव। देयर यू गो, मेजर के जरिए आपने ये भी काम कर लिया है। Okay, now comes the most the trickiest part, because अभी तक हमने चीजें ना सिंपल रखी हैं, but this is something that is going to be very effective in your project, because project में जो data है उसमें चीजें इकट्ठी नहीं है unfortunately। So let's do this, because what I want to find is cost of logistics service, because let's suppose कि एक लॉजिस्टिक्स की कंपनी के साथ आपका मुआहदा है जो ये कह रही है कि 1% जो भी आप बेचेंगे वो उनका है। So the thing is कि you need to translate that into figures। 1% of whatever you sell belongs to the logistics company। Now there's a problem here। प्रॉब्लम इज कि सेल्स की तो आपको यहाँ पे मिल जाएगी, सेल्स के मुतालिक रिकॉर्ड तो मिल जाएगा इस टेबल के अंदर, बता वॉल्यूम नहीं है यहाँ पर। वॉल्यूम आपका जो है वो पड़ा हुआ है किसी और कॉलम में। लेट मी जस्ट फाइंड है प्रोडक्ट हायरार्की के अंदर वॉल्यूम है। तो ये अब मसला है, because what we really want to do is multiply volume with sales, and we won't be able to do this because ये अगर आप गौर करें तो 2 डिफरेंट टेबल्स के अंदर ये मौजूद है। लेट्स ट्राई टू डू दिस, बिकॉज मैं ये शो करना चाहूंगा। लेट्स क्रिएट द मेजर and there you go। You can say cost of logistics service, sorry the measure automatically जो है वो हो गया है। Might have to create a new one, just create a new measure। Cost of logistics service is equal to, now the thing is कि वो मुझे चाहिए ना वॉल्यूम, एंड ऑफ कोर्स नाउ द अगेन द इशू इज कि मैं मल्टीप्लाई नहीं कर सकता डायरेक्टली, इट हैज टू बी सम काइंड ऑफ एग्रीगेशन। सो या द थिंग इज के यहाँ पे कुछ ऐसा लग नहीं सकता कि मैं डायरेक्टली करूँ, तो डेफिनेटली इसमें यू नो एक्स का फंक्शन ही लगेगा, इटरेटिव जो फंक्शन है
It could be sum x or average x, and let's just go for sum x because I really want to sum things up here. And जो टेबल इंस्टेंटली मेरे लिए इंपॉर्टेंट है वो ऑब्वियसली सेल्स का है, बिकॉज इसके अंदर आई हैव गॉट a column that is giving me critical information, and वो है जी आपकी सेल्स। तो उसको अगर मैं सेल्स टाइप इन करूं तो याद है, ठीक है। बट नाउ द प्रॉब्लम इज कि अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करना चाहूँ किसी और टेबल के साथ तो इट वोंट बी एबल टू डू दैट, ठीक है। तो अगर मैं वॉल्यूम यहाँ पे टाइप करूँ जितना मर्जी टाइप करूँ, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क बिकॉज़ देयर इज नो सच थिंग। इस टेबल के अंदर देयर इज नो सच थिंग, वॉल्यूम है ही नहीं। वॉल्यूम बेसिकली प्रोडक्ट हायरार्की के अंदर है। दैट्स एन इशू which is resolvable because हमें पता है कि दोनों का एक रिलेशनशिप है, दोनों को हमने कनेक्ट किया हुआ है। अगर दोनों टेबलों को कनेक्ट किया हुआ है तो व्हाट यू कैन डू is bring in some action here from some other table which is connected of course। वो आप related के टेबल से करोगे, related का फॉर्मूला लगाओगे and simply now you can say कि वॉल्यूम वाला प्रोडक्ट हायरार्की के अंदर जो वॉल्यूम वाला है ना कॉलम, वो मुझे दे दो, and now the iteration can really occur। अगर मैं इसको करूं तो इसको काम करना चाहिए। इफ आई प्रेस एंटर, ये देखिए अभी सक्सेसफुली क्या कर रहा है कि सेल्स के टेबल के अंदर सेल का जो पहली वैल्यू है उसको रिलेटेड टेबल के अंदर जाकर मल्टीप्लाई कर रहा है वॉल्यूम के साथ। तो नाउ आई कैन रियली सी कि कॉस्ट ऑफ लॉजिस्टिक सर्विस क्या है। एंड कैटेगरी वाइज अगर मैं देखना चाहता हूँ, लेट मी जस्ट डिलीट दिस विजुअल एंड आई जस्ट वांट टू ब्रिंग इन मे बी अनदर टेबल, व्हाई नॉट। और इसके अंदर just want a couple of things here, category, ठीक है। और रेवेन्यू देख लेते हैं हम। अब हमने जो रेवेन्यू निकाला वो देख लेते हैं, और उसके अलावा जो कॉस्ट ऑफ लॉजिस्टिक है वो देखते हैं। एक काम कर लूं मैं बिफोर ब्रिंगिंग इट इन, एंड आई जस्ट वांट टू मेक श्योर दैट दिस इज a currency and टू डेसिमल प्लेसेस पे भी ले जाता हूँ इसे। ये थोड़ा सा टाइम लेती है जैसे आपको पता है, सिस्टम में थोड़ा सा बर्डन है ये। सो आई कैन नाउ ब्रिंग इट इन हियर एंड देयर यू गो। अब मुझे पता चल रहा है कि क्या हो रहा है यहाँ पे। Category wise I'm getting the cost of logistics services as well. Something makes me think that this is not right because हमने ये डिसाइड किया था कि जो cost of logistics service है that is 1%। What I really need to do is revisit the formula because ये काफी heavy figure लग रही है। अगर मैं cost of logistics में जाऊँ, surely enough I missed up something, and that is that I wanted to multiply the entire value with 0.01 because 1% था ना। तो let's see if that this works। there you go। अब ये बिल्कुल दुरुस्त जो है ना वो हमें कॉस्ट बता रहा है और रेवेन्यू भी बता रहा है, और साथ हमें कॉस्ट भी बता रहा है कि लॉजिस्टिक्स कितनी लग रही है, which is absolutely great। ठीक है जी। सो आई थिंक द यहाँ तक अगर आपने कर लिया और आपको समझ आ गया तो ज्यादातर टैक्स जो है ना वो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा। ये जो मैंने बताया है ना कि डिफरेंट टेबल से कैसे उठाना है आखिरी पार्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आपके प्रोजेक्ट में जो फाइल है उसमें आपको रेवेन्यू अगर कैलकुलेट करना है तो यू विल हैव फिगर्स इन डिफरेंट टेबल्स, उनको आपको इसी तरीके से मेजर उसका बना के करना पड़ेगा। सो आई होप दैट यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल एंड hope that you prepare your projects and final
इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकती हैं, ऑफिस में भी आके समझ सकते हैं। इफ आई एम अवेलेबल इंशाल्लाह हेल्प यू आउट।